Welcome to this edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I am Anubha Rohatgi, and with me is my co-anchor in Hindi, Nikhil Shukla. नमस्कार, मार्केट मंत्र के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हम लेकर आए आपके लिए आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार से जुड़ी हुई खबरें, और हम उन पर चर्चा भी करेंगे। और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइंस के साथ में। अनुभा, हेडलाइंस। Thank you, Nikhil. Industrial output jumps to 5-month high of 5.7% for July this year. Retail inflation slips to 6.83% in August. And key domestic share indices close almost flat. Sensex above 67,200 level. Nifty closes near the 20,000 mark. औद्योगिक उत्पादन इस वर्ष जुलाई में 5 महीने के उच्च स्तर 5.7% पर रहा। खुदरा महंगाई इस वर्ष अगस्त में 6.83% पर पहुंची और भारत के प्रमुख घरेलू शेयर बाजार आज करीब सपाट कारोबार के साथ बंद हुए। हालांकि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 67,200 के स्तर पर बंद हुआ और निफ्टी करीब 20,000 के स्तर पर पहुंचा। And before we start with the main story, let me welcome to the program senior business journalist Sushma Ramchandran. Ms. Ramchandran, welcome to Market Mantra. Thank you, Anubha. Let's begin with the top story. The Index of Industrial Production, IIP, jumped to a 5-month high. As per the Ministry of Statistics and Program Implementation data released today, IIP grew by 5.7% in July this year as compared to 3.7% in June 2023. It was 2.2% in July 2022. The manufacturing sector, having 77% weightage in IIP, grew by 4.6%. Basic metal sector climbed 12.8%. Mining output rose by 10.7%. And electricity grew by 8% for July 2023. Ms. Ramachandran, how do you view this figure that has come out today of the IIP jumping to a 5-month high? Well, definitely it's a positive development, and obviously, as you pointed out, manufacturing is such a large share in this, with such a large share in the IIP, is 4.6%, which is good, but it could have been better. I think one is looking for better growth in the manufacturing sector. Infrastructure, of course, is doing very well at 11.4%. Mining is also at 10.7%, and electricity, of course, has shown a spurt from 4.2 to 8%. So these areas have all done very well. I think electricity especially has shown a sharp spurt. So, but overall, of course, 5.7 is very positive. It's grown from the previous level. I think that was 3 point something, if I'm not correct. 3.7%, yes. 2.7%. Okay, 2.7%. So definitely virtually double, and it shows that the general economic indicators for the year are looking up. Do you think there are specific factors which have led to this jump? Well, I think obviously you can see that there has been a rise in demand already. There is the economy is recovering from the twin blows of the pandemic as well as the Ukraine conflict last year. People had been talking about a K-shaped recovery, but it looks to be, it is not a very sharp recovery, but it is definitely an upward trend this year. And as I said, you can see the rising demand, especially, for instance, in the vehicle sector, passenger vehicles, which is a very huge sector of the economy. The demand has risen very sharply there. So, and of course, as I said, electricity has also gone up sharply. So this is electricity, mining, these are core sectors. So when you look at core sectors going up, these kind of infrastructure sectors, that has a multiplier effect on the rest of the economy. So this is definitely a positive, and if this is the
data for July, then we can expect a better performance in the rest of the year, because obviously you will have, as the festival season comes nearer, you're going to have more demand, and you're going to see obviously, in turn, greater demand in the industrial sector. सुषमा, आंकड़े अपने आप में बहुत कुछ कहते हैं और भारत के लिहाज से अगर देखें तो काफ़ी सकारात्मक ये सब कुछ नज़र आ रहा है। और ऐसे समय में जब लगातार वैश्विक चुनौतियां बनी हुई हैं, भारत इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में एक अच्छी खासी जंप लगा रहा है, बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहा है। और जो जितनी भी योजनाएं सरकार ने बनाई हैं, खासतौर पर डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ देशवासियों को एक अच्छा जीवन माहौल कराने के लिए कई सारी उपलब्धियां इसमें देखी जा सकती हैं। जैसा कि आपने भी बताया कि आंकड़ों को थोड़ा और बेहतर होना चाहिए था, तो क्या आप मानते हैं कि क्या चीजें और बेहतर की जा सकती हैं? देखिए, अभी मेरे ख्याल में जो पॉलिसी डायरेक्शन सरकार ले रही है वो बिल्कुल ठीक है। मैं ये नहीं कह सकती कि इसको गलत तरीके से कुछ हो रहा है और आगे के दिनों में और क्या हो सकता है। पॉलिसी डायरेक्शन तो सरकार की बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जैसे आपने खुद ही कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर उनका जो एम्फेसिस है पिछले 2 सालों में, उसका असर अब आ रहा है और उसका असर और भी आएगा, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ में टाइम लगता है। लेकिन सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में अभी थोड़ी सी इतना ज्यादा ग्रोथ नहीं हुआ जितना होना चाहिए था, लेकिन अभी इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा आ रही है, निवेश काफी बाहर से आ रहा है। पिछले 2 सालों में निवेश बहुत आ रहा है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो उसका भी असर आएगा और मेरे ख्याल मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में भी पिकअप दिखाई देगा। जो नीतियां चल रही हैं सरकार की, जैसे प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है और जो ये मेक इन इंडिया प्रोग्राम जो है, ये मेरे ख्याल अपने आप में बहुत ही बेहतर है। इस वक्त मैं ये नहीं कह सकती कि आप इन नीतियों को बदलना चाहिए, ये नीतियों को शायद स्ट्रेंथन करना चाहिए। आप PLI स्कीम और भी क्षेत्रों में डाल सकते हैं और वहां भी और फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ सकता है, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट आ सकता है। तो ये मेरे ख्याल में जो पॉलिसी डायरेक्शन है उसको बिल्कुल बदलना नहीं चाहिए। Moving on to the story about inflation. Retail inflation based on Consumer Price Index (CPI) slipped to 6.83% in August this year. According to the Ministry of Statistics and Program Implementation data released today, rural areas saw a slightly higher inflation rate at 7.02% compared to urban areas at 6.59%. CPI for the last month fell from a 15-month high of 7.44% in July, mainly due to a decline in vegetable prices. The Consumer Food Price Index, or CFPI, for August stood at 9.94%, falling from 11.51% in July. The retail inflation still remains above the Reserve Bank of India's upper tolerance limit of 6%. The government had mandated the central bank to maintain retail inflation at 4% with a margin of 2% on either side. Sushma, the RBI governor Shaktikanta Das had last month itself, he had said that he expects inflation to moderate from September onwards, but we are luckily seeing the moderation from the month of August itself. What do you attribute it to, of course, apart from the falling prices of vegetables? Well, I think largely, of course, it is. You see, this has been a supply side phenomena. And the government has taken action, and you talked about vegetables. Of course, vegetable prices have declined. There is a reason, because supplies have been augmented. Now, people had been talking just last month, about such high prices of potatoes. So suddenly, we are back to virtually normalization in prices of tomatoes, 30 or 40 rupees a kilo, back to the normal levels. But at the same time, it takes a little while for these supply-side measures to take effect. So you still have, within the area of inflation, you have 9.9%, purely for food inflation, and within that you have vegetables rising at the rate of 26%, pulses rising at the rate of 13%. So the key factor is now going to be, once again, supply-side measures, which the government will have to take. They have taken certain measures also in terms of banning the export of rice, or when putting, export set on export of basmati rice. So these are, of course, not very desirable measures
if we seek to become long-term exporters of these agricultural commodities. So these are not desirable, but perhaps in the short run, this can be adopted. One would hope that the government would remove these kind of restrictions, in the very soon. Yeah. And we also saw, even, when the CPI figures came last month and even this month now for August, that rural areas are seeing slightly higher inflation when it, compared to the urban areas. What are the reasons for this? Again, I would say this is a factor of supply side of availability and the fact that, when you have distribution of, upfront the vegetables are coming from rural areas, all these products are coming from rural areas, but products like pulses, cereals, etc. are processed and then sent once again back to the rural areas. So the distribution networks are not as efficient in rural areas as in urban areas. So this is, I think, largely the factor because the focus, once again, we have to focus on food inflation. If you see, even fuel inflation is probably just about 4 or 5%. And, even though prices of energy prices have been going up abroad, within the country, these have been curtailed to a large extent by freezing retail prices of petrol and diesel. The pump prices have been controlled. So we have really to focus on supply side measures, distribution, and this has been the reason, I would say, also for the inflation in rural areas being slightly higher than in urban areas. सुषमा, अभी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की हम बात कर रहे थे, कहीं ना कहीं इसमें पूरा क्रेडिट सरकार को जाता है। सरकार ने जो खासतौर पे आम रोज़मर्रा की चीज़ें थी उनको निर्यात पर पूरी नज़र रखी और कीमतें ना बढ़ने पाए, इसके लिए बफर स्टॉक पर भी अपनी नज़र बनाए रखी। खासतौर मैं आपका जिक्र करना चाहूँगा, जो दालों का बफर स्टॉक हमारे पास रहा, लोगों ने कालाबाजारी करने की बहुत कोशिश की, लेकिन सरकार ने उस पर भी लगाम लगाई है। तो सरकार अब पहले से ज़्यादा एक्टिव होकर के इन क्षेत्र में काम कर रही है। तो आप मानेंगे कि ये सारी जो विधियां अपनाई गई हैं, ये जो काम किए गए हैं, इसने काफी हद तक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है महंगाई अधिक ना बढ़ने के लिए? बिल्कुल, इसमें इस वक्त जो महंगाई की जो दर है और उसकी जो वजह है, जैसे मैंने कहा कि सप्लाई साइड फैक्टर्स है, इसमें सरकार का पूरा हाथ है। और ये जो महंगाई कम हुई है, जो विधियां जैसे आपने बताई है, ये जो नीतियां अपनाई गई हैं, ये सब्जियां की डिस्ट्रीब्यूशन में, आप जैसे सब्जियां जहां सस्ती है वहां से खरीद के दूसरे क्षेत्रों में वहां डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, और बफर स्टॉक बनाने की जो नीति है, तो ये सारी जो कंज्यूमर फ्रेंडली जो एक्टिविटीज हैं सरकार ने अपनाई हैं, उसकी वजह से ये महंगाई की दर थोड़ी सी कम हुई है। और आगे वाले मेरे ख्याल अगले महीने तक शायद और भी काफी कम हो जाएगी, उम्मीद तो यही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज शेयर बाजार पे अब नजर डाल लेते हैं। तो भारत के प्रमुख घरेलू शेयर बाजार आज करीब सपाट कारोबार के साथ बंद हुए। हालांकि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 67,200 के स्तर पर बंद हुआ। वैश्विक शेयर बाजारों से प्राप्त हुए मिले-जुले संकेतों से सेंसेक्स और निफ्टी अलग अलग स्तरों पर पहुंचकर बंद हुए। जहां एक और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 94 अंक की बढ़त के साथ 67,221 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 3 अंकों की सुस्ती दर्ज करता हुआ 19,993 पर बंद हुआ। विस्तारित बाजार में आज बीएसई मिड कैप इंडेक्स 4% से अधिक लुढ़क गया, जबकि स्मॉल कैप इंडेक्स में करीब 3% की गिरावट आई। The key domestic share indices today ended almost flat. However, the BSE Sensex finished above the 67,200 level. The Sensex and the Nifty both ended divergently amid mixed cues from global share markets. The Sensex finished 94 points up at 67,221, while the Nifty settled 3 points down at 19,993. In the broader market at the BSE, the mid-cap index plummeted more than 4% and the small-cap index declined around 3%. In the Sensex index, which is a pack of 30 companies, shares of 15 companies appreciated while 15 declined. TCS surged 2.9%, Larsen & Toubro rose 1.7%, and Infosys gained 1.7%. On the other hand, Power Grid plunged 3.5%, NTPC declined 3.3%, and Tata Motors fell 2.2%.
In sectoral indices at the BSE, 17 out of 20 sectors witnessed losses. Among the gainers, the tech index gained 0.8% and the IT index rose 0.6%. On the other side, power and utilities both plunged 3.7% and telecom declined 3.6%. The overall market breadth was positive as shares of the overall market breadth was negative as shares of 745 companies appreciated and 2,934 companies declined. A total of 126 shares remained unchanged. Sushma, apart from the major indices, of course, the Sensex and the Nifty now, coming to the mid-cap and small-cap indices, lately there's been all this talk of, how they've been a phenomenal surge. But yesterday a report came out which said that this particular surge in the recent rally in the mid and small-cap stocks isn't backed by fundamentals and it is a case of irrational exuberance. So there's a bit of, confusion here. How would you explain that? No, I would call it irrational exuberance. This is, of course, there is some report, but I don't think that is the case. If you see the data is showing that most of the surge is in the small and medium caps, actually. Not small cap, but more in the medium caps. There has been a surge. And that, I think, is backed by the performance of this sector. Also, you will find the large caps, of course, have been performing very well. I don't think that we can call it irrational exuberance. As of now, it is not yet what you might call a bubble. If you are talking about irrational exuberance, one would presume that it's kind of a bubble that people are just irrationally trying to place their bets on these companies. That is not the case right now. And I would say that, in fact, you are getting more realistic valuations for medium cap companies, which had been lagging behind earlier. Earlier, the surge was largely in the large cap. And this was the sector that was lagging behind. So I think now you are coming actually to more realistic valuations of these companies, which are also, of course, performing better, having suffered in the pandemic, having suffered due to the Ukraine conflict. The performances are better. You're getting if you see the quarterly results, corporate results, these are also showing definitely better. So I would not agree with that report. In fact, some analysts believe that the SMID stocks still have more room to fly. What would you say to that? Sorry, what is this? So I'm saying that some analysts, on the one hand, you have this report which says that it is, it's just an exuberance. It is an irrational exuberance. But on the other hand, there are analysts who believe that the small and mid-cap stocks still have room to fly. There's still room to expand and to surge. Yes, absolutely. That's precisely what I'm saying. Because they were not in the earlier, some months ago, you would have found that the surge was mainly in the large cap sector. And this was the small and medium caps had been left behind. And it is, you are finding the surge in this sector. And I think this is a more, as I said, bringing to realistic valuations. I think that is a correct assessment, that there is room to fly there, definitely. And they are performing also better now. Because, of course, that small and medium sector had considerably had a very difficult time from 2020 onwards till 2022. This was a very difficult time for medium and small enterprises, and the situation has vastly improved now. So you see that in their corporate earnings, you will see that in their in their performance. So I think this is merely reflecting the actual fundamentals. सुषमा, अभी बीएससी मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स की अगर हम बात करें तो इस साल लगभग 28% की तेजी दर्ज की जा चुकी, जिसमें मुनाफा वसूली का एक अहम रोल रहा है। और ख़ासतौर पे ऐसे समय में जब हमारे देश में ऑटोमोबाइल सेक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में बहुत सारा काम हो रहा है और लगातार इसमें विनिर्माण भी बढ़ रहा है, तो ऐसे में ये जो आज हमने गिरावट देखी, इससे बहुत ज़्यादा फर्क तो नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि लगातार हम ये भी देख रहे हैं कि हमारा जो शेयर मार्केट है वो ऊंचाइयों पे ही चढ़ता जा रहा है। नई नई ऊंचाइयों को हम देख रहे हैं और जो छोटे हमारे निवेशक हैं उन्हें भी अब काफी फायदा हो रहा है। बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये जो अभी देखिए 8 दिन से तो रैली चल रही है, ये 8वां दिन है। आज शायद मार्केट फ्लैट है,
इसमें अब जैसे आपने कहा, इसमें तो कुछ फिकर करने की बात नहीं है। डेफिनेटली थोड़ा सा बीच में प्रॉफिट टेकिंग होती है और थोड़ी सी अप्स एंड डाउन, थोड़ी सी वॉलेटिलिटी होती है, जी। लेकिन बाय एंड लार्ज ये जो रैली हुई है पिछले 50 सेशंस में से, अब निफ्टी को ही देख लीजिए, 20,000 तक पहुंच गई कल, तो ये बहुत ही बड़ा मकाम है निफ्टी के लिए, और शायद 19,000 20,000 तक रहेगा कुछ दिनों के लिए, लेकिन ये बहुत जल्दी ही 19,000 से 20,000 तक बहुत जल्दी पहुंच गया है। तो मेरे ख्याल में ये जो स्टॉक्स में हम देख रहे हैं, शेयर मार्केट में जो हम देख रहे हैं, वो एक उससे मिरर है जो हमारी इंडस्ट्रियल आउटपुट, इंडस्ट्रियल और इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र का जो स्थिति है। जी। और अब रुपए पे नजर डालें तो विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज 82 रुपए 92 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ। विश्व की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती दर्शाने वाला डॉलर इंडेक्स दिन के कारोबार में 104.83 पर कारोबार कर रहा था। Moving on, Prime Minister Narendra Modi has acknowledged the role of auto industry in the country's growth. In a message for annual convention of the Society of Indian Automobile Manufacturers, or SIAM, held in New Delhi today, Mr. Modi stressed the need to create sustainable and environment-friendly ecosystem and sought the Indian automobile industry to draw a pathway towards fulfilling the goals of Amrit Kal. The Prime Minister's address was read out by SIAM President Vinod Agarwal. In his message, Mr. Modi emphasized that the automobile industry is both a catalyst and a beneficiary in the value creation cycle. He added that the industry has contributed to income growth by employing crores of people. Sushma, you know what the Prime Minister said about the automobile industry contributing to economic growth and income growth. And we also saw that, that figures have come out yesterday which tells us that domestic sale of passenger vehicles grew 9.4% year on year in August, which is the highest ever. So in a way, it gives credence to what the Prime Minister has said. See, we don't realize it, but the automobile sector comprises as much as about 50% of the entire manufacturing sector, and this comprises not just automobile manufacturers, the component manufacturers, accessory manufacturers. So it is a huge linked industry of components and and vehicles itself. So the rise in sales of these companies, the rise in outputs by these companies has a multiplier effect on the entire economy. So if it has risen by 9%, and this is a rebound, considering once again, I'm repeatedly talking about the pandemic, because we cannot get away from the fact that all industries were in a slump at that time in 2020, 2021. They were struggling to get back. And now the automobile sector, in fact, has had to face a situation of such high demand that they have not been able to meet it, and because of the non-availability of certain components like chips, for instance. I think that problem has now been resolved in most areas, but even so, the demand has been extremely high. 9%, as you pointed out, is record demand for record output for these vehicles, record sales for this sector, and it will have a multiplier effect on the rest of the economy. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने स्पष्ट किया है कि डीजल वाहनों की बिक्री पर 10% जीएसटी लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं। उन्होंने कहा कि मीडिया में ऐसी खबरें चल रही हैं कि डीजल वाहनों पर अतिरिक्त जीएसटी लगाया जाएगा। श्री गडकरी ने कहा कि सरकार की जानकारी में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध है। डीजल वाहनों से वायु प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार स्वच्छ और हरित ईंधन के इस्तेमाल को प्रोत्साहित कर रही है। सुषमा, अभी हमने एक तरफ बात की कि लगातार ऑटोमोबाइल सेक्टर में हम बढ़ोतरी को देख रहे हैं, और दूसरी तरफ ये भी है कि हम 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं। ऐसे में ग्रीन व्हीकल यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। हम देख भी रहे हैं कि सड़कों पर हमें बड़ी संख्या में इलेक्ट्रिक वाहन नजर आते हैं। तो ये किस तरह का बदलाव हो रहा है, इकोनॉमी पर इसका किस तरह का असर आप देखते हैं? ये एक बहुत बड़ा बदलाव है, और ये मैं कहना चाहती हूँ कि
करीबन ये सरकार ने इतना इसके ऊपर जोर दिया था कि करीबन 2 साल पहले ये जो क्षेत्र है उन सब के कंपनीज ने ये शिकायत की कि सरकार बहुत ज्यादा जोर दे रही है ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर, और आप इतना कर रहे हैं तो लोग अभी हमारी जो पेट्रोल और डीजल वाली गाड़ियां हैं वो खरीदेंगे नहीं अगर आप इतनी जल्दी ये पॉलिसी ले आएंगे। तो ये जो इनिशिएटिव था सरकार का वो बिल्कुल ठीक था, क्योंकि इस वक्त हमें जो कार्बन एमिशन नॉर्म्स हैं, जो हमने कमिटमेंट्स किए हैं, जो वैश्विक जो अग्रीमेंट्स हैं उनमें, तो उस बैकड्रॉप में ये जो सरकार ने नीतियां बनाई हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, उन्होंने सब्सिडीज भी तय की हैं। जो कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाएंगी उनके लिए काफी सब्सिडीज और काफी सपोर्ट दिया गया है। तो मेरे ख्याल में इस वक्त वॉल्यूम्स इस वक्त बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन जो ग्रोथ रेट है इनका बहुत ज्यादा है, क्योंकि जो लोग अब गाड़ियां खरीद रहे हैं तो सोच रहे हैं कि अगर हम इस वक्त ही एक इलेक्ट्रिक व्हीकल ले लें तो इससे हमें आगे वाले दिनों में फायदा होगा। ये एक तो बहुत सस्ती होगी चलाने से, और इसकी इस वक्त शायद ज्यादा कीमती है दूसरी पेट्रोल और डीजल गाड़ियों के मुकाबले में, लेकिन आगे वाले दिनों में इसका बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो डिमांड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बहुत ज्यादा है, और मेरे ख्याल में जो मैंने इसके बारे में थोड़ी सी स्टडी की है कि ये जो है कुछ अगले 5 सालों में हमारी जो पूरी इंडस्ट्री है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, वो बदलने वाली है, और कम से कम जो उत्पादन है शायद 50 या 60% जी सुषमा जी, अब हम अगली खबर पर नजर डालते हैं। अधिकतर एशियाई शेयर बाजारों में आज गिरावट देखी गई। केवल जापान का निक्केई सूचकांक 0.9% बढ़त में रहा। दक्षिण कोरिया के कॉस्पी में 0.8% की सुस्ती देखी गई। हांगकांग का हैंगसेंग 0.4% लुढ़क गया। चीन का शंघाई कंपोजिट सूचकांक 0.2% नीचे आ गया। सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम सूचकांक में 0.1% की मामूली गिरावट आई। यूरोपीय शेयर बाजार में आज मिला जुला रुख रहा। लंदन का FTSE 100 0.5% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। फ्रांस का कैक 0.1% और जर्मनी का डेक्स 0.4% नुकसान में चल रहा था। US stocks ended the session higher and the dollar retreated yesterday. The tech-heavy Nasdaq Composite Index led the US equities rally, gaining 1.1%, with gains in electric automaker Tesla and Amazon.com. The S&P 500 gained 0.7% and the Dow rose 0.3%. Moving on to commodities, oil prices rose more than 1%, boosted by a tighter supply outlook, while investors awaited macroeconomic data that could indicate whether interest rates will rise further in the United States and Europe. In intraday trade, Brent crude was trading at $91.70 per barrel. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अक्टूबर अनुबंध के लिए सोने के मूल्य में 325 रुपए की आज गिरावट हुई। सोना 58,605 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा था। दिसंबर अनुबंध के लिए चांदी 495 रुपए लुढ़क कर 71,445 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। उधर वैश्विक बाजारों में न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में सोना आज गिरावट के साथ $1,935 और 40 सेंट प्रति औंस कारोबार कर रहा था। वहीं दिन के कारोबार में चांदी सुस्ती के साथ $23 और 20 सेंट प्रति औंस के आसपास कारोबार कर रही थी। And that's all we have time for in this program. Thank you so much for joining us on the program, Sushma Ramchandran, and giving your views. Thank you. And before we close, a reminder of the headlines. Industrial output jumps to 5-month high of 5.7% for July this year. Retail inflation slips to 6.83% in August. And key domestic share indices close almost flat. Sensex closes above the 67,200 level. Nifty closes near the 20,000 mark. And that's it in this edition of Market Mantra. We will be back tomorrow with yet another edition of the program at 6:30 p.m. Do join us then. Till then, from the entire team of Market Mantra, Namaskar. Namaskar. Good evening. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. This is Akashvani, the news read by Gaurav.